Look at this example. It's a very good question for board examinations, for competitive examinations, NEET, JEE, anything. We have a block of mass M, and this block is lying on this rough horizontal surface. Coefficient of friction between block and this surface is mu. Question says that find out minimum force. Find out F minimum so that this block can be moved on this horizontal surface. Now, normally आदमी क्या करता है? Downward force is what? mg. To balance this mg, we have a normal reaction force. N is mg. If you exert a force F in this direction, then this block has a tendency to move in the direction of force. And to oppose that, friction develops at this contact surface. This is Fr. If N is mg, we know that Fr maximum is mu n, which for this setup is mu mg. That's the maximum value of friction, and therefore when you increase this F at one point of time, this M is about to move. About to move. When you say about to move, remember, block is still at rest. It is about to move. About to move means friction has reached its maximum value. And what's maximum value? Mu mg. Mu mg. At this point, this body is about to move, but still is at rest. If it is at rest, that means F and Fr, they both are same. This rest, it says that F is what? Fr. Now, right now, when M is about to move, is in this condition, this F is minimum and Fr is maximum. कई बार हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए चीज क्लियर होनी चाहिए. फिर भी अगर नहीं है, then you can see. Let's take some numerical values. Suppose Fr max is coming 20. If Fr max is coming 20, if you apply a force of 1, then Fr right now is not maximum. If you say Fr is 20 at this moment when F is 1, then it creates a problem. If you say that Fr is mu mg, which is coming 20, then there is a problem. Pulling force is 1 and in this direction force is what? 20. होगा क्या? बॉडी उधर चली जाएगी. आप कहाँ खींच रहे हो? इस तरफ. बॉडी कहाँ चली गई? In that direction. Something which is not possible. तो होता क्या है? Right now, you know that this body is at rest, but it is not in the condition of about to move, and therefore Fr is 1. Now, body, when force is 1,
FR is 1, is at rest, is not moving. हमने इस F को इंक्रीज किया 10, F को इंक्रीज किया, FR भी क्या हो गया 10, because friction is what? Self adjusting. Maximum कितना मिल सकता था? 20. 10 is the pulling force, 10 is the opposing force, body is still at rest. अभी about to move वाली condition develop नहीं हुई है. Then you further increase this force, you made it what? 19. Pulling force is 19, friction also becomes 19, because maximum you can get is what? 20. This is 19, this is 19. Body is still at rest. Then you increase this force from 19 to 19.99, let's say. Friction becomes what? 19.99. Body is still at rest, but is not moving. Is at rest, about to move, अभी नहीं आया है. Now what happened? हमने इस F को कहां पहुंचा दिया? 20. Once this is 20, FR, it also becomes what? 20. Body is at rest. But this is the situation which we call about to move. इस 20 पर सिस्टम किस हालत में आ गया है? About to move. 20 बॉडी मूव करने वाली है. अगर आपने इस 20 की जगह पर अब 20.1 इतना फोर्स लगाया, then for this force you can say that this body is going to move. When this is 20.1, हमारा जो फ्रिक्शन है वो क्या बनेगा? 20. For all these cases, body was at rest. At this about to move, when it is 20, body is moving. Body is moving, which means what? अगर मैं 20.1 की जगह पर 25 लगाऊंगा, force, pulling force is 25. कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन आप लेकर आ सकते हो? 20. तो फ्रिक्शन कितना आपको मिलेगा? 20. बॉडी अभी भी क्या करेगी? मूव. इस 25 पर ही बॉडी क्या करेगी? मूव. बट वी नीड व्हाट? मिनिमम फोर्स फॉर विच बॉडी कैन मूव. दैट फोर्स इज व्हाट? 20. When your F is 20.1, 25, 27, 2000, body move कर रही है. तो what is the minimum जहां पर ये मूव करने की हालत में आ गया है? ये लिखा हुआ है F minimum. इस F minimum पर बॉडी किस कंडीशन में है? About to move. लेकिन जब ये about to move वाली कंडीशन में है, फ्रिक्शन कितना पहुंच गया है? 20. What is 20? What is 20? 20 is FR max. So this is minimum, this is max. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सीधा सीधा एक लाइन का पार्ट. अगर आपसे कोई ये पूछता that find out minimum horizontal force for which this body can move, then that minimum horizontal force, F minimum, horizontal force is what? Mu mg. When force is mu mg, we say that this body is still at rest but is about to move. जब आप इस पर 20 लगाओगे फोर्स, फ्रिक्शन भी कहां पहुंचेगा? 20. जस्ट बैलेंस हुआ है, बॉडी अबाउट टू मूव कंडीशन में है. बट हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट F minimum. There is no restriction that it should be a horizontal force, which means अपने को
ये चीज चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम फोर्स को किसी एंगल पर लगाएं, किसी एंगल पर इस तरह से, तो शायद इस म्यू एम जी से भी कम फोर्स लगाकर बॉडी को मूव करवाया जा सके. हाउ कैन दैट इज पॉसिबल और नॉट, विल सी दैट. होपफुली इतना पार्ट समझ में आ गया होगा. ज्यादातर लोग जब इस क्वेश्चन का आंसर देकर आते हैं म्यू एम जी, then they forget that they are answering F minimum for horizontal force. Horizontal force which can move this body. हमें क्या चाहिए? Any force which can move this body. Now, फिर कुछ लोगों को लगता है कि सर हॉरिजॉन्टल की जगह एक काम करते हैं, सर इसको वर्टिकली ऊपर ले जाते हैं. आपने मूव करने के लिए बोला है, कैसा भी मूव करे, ठीक. अगर आप इसे वर्टिकली लिफ्ट करना चाहते हो तो एक बड़ी इजी सी चीज है ये. तो एफ मिनिमम आपको किसके इक्वल लगाना पड़ेगा? कम से कम एम जी. जब आप अपवर्ड फोर्स बॉडी के वेट के इक्वल लगाओगे, एट दैट मोमेंट ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी, दैट विल बिकम व्हाट? जीरो. And you are just about to lift it off the horizontal table. इस केस में जो F minimum है, this is coming what? mg. Downward force mg, just उठने वाला है. F minimum is also what? mg, just उठने वाला है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन क्या पहुंच गई है? जीरो. For vertical takeoff, you need a minimum of what? mg. इससे कम तो म्यू एम जी है, बिकॉज वी नो दैट म्यू इज ऑलवेज व्हाट? लेस देन 1. दैट मीन्स इफ यू आर लुकिंग फॉर मिनिमम फोर्स व्हिच कैन मूव दिस बॉडी, देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग टू लिफ्ट इट वर्टिकली, क्योंकि वर्टिकली लिफ्ट करने के लिए आपको एम जी तो चाहिए ही चाहिए. जबकि अगर आपने हॉरिजॉन्टली से खींचा होता तो आपके पास जो मिनिमम फोर्स आता वो कितना आता? म्यू एम जी. बट नाउ हम क्या और किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? हम चेक करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक फोर्स किसी एंगल पर लगे और उस एंगल पर लगने की वजह से इसका मूवमेंट तो हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन जो फोर्स आए वो फोर्स हमारा इस मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स से भी क्या हो जाए? कम हो जाए. किस तरह से उस चीज को चेक करेंगे देखते हैं. फर्स्ट, नोट डाउन दिस मच. Let's see how to handle this question. This is the block. Downward force is mg. Normal reaction is n. Well, let's say force acts at some angle theta with the horizontal. This angle is theta. What is the first advantage of having force at some angle theta? The pulling angle theta. When you take the component, this component, horizontal component, is coming F cos theta. Vertical component is coming F sin theta. We know that we're not interested in vertical takeoff. Vertical takeoff में आपको पता है, हमने देखा था अभी यहां पर कि आपको फोर्स mg से भी क्या लगाना पड़ता? ज्यादा. There is no vertical lifting, which means what? If there is no vertical movement, then vertical forces are balanced. क्या क्या vertical forces हैं? n, as well as what? F sin theta. F sin theta. And
this and this, they are balancing what? mg. They are balancing what? mg, which gives us normal reaction as mg minus f sine theta. And this is normal reaction, then what is Fr max? Fr maximum is mu n, which is mu times mg minus f sine theta. I hope you can see the first advantage. When we are trying to pull this block horizontally, downward force was mg. There was a normal reaction coming like this. Pulling force was horizontal, and therefore this horizontal force had no contribution in this direction. यहाँ पर n was equal to what? mg. But right here n is what? mg minus f sine theta, which is what? Less than mg. क्या फायदा हुआ? If n is less, that means Fr maximum, जो maximum friction है, वो भी क्या हो गया है हमारा? Decrease as compared to this. तो maximum friction को हमने कम कर लिया. जो लोग इस ब्लॉक को रोकने के लिए थे, हमने वो लोग कम कर दिए हैं. इसका मतलब इसको खींचना, इसको मूव करवाना relatively easy हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? यहां देखो आप. This is the pulling force F cos theta, and to oppose this F cos theta, क्या डेवलप हो चुका है यहां पर? Fr. That's the value of Fr. Now हम हमेशा किस कंडीशन की तरफ मूव करते हैं? This m is about to move. Again, remember, when you say about to move, it means friction has reached its maximum value. Just move करने ही वाला है. Move करने वाला है, इसका मतलब friction जो भी था कहां पहुंच गया है? अपने मैक्स पर. आप थोड़ा और फोर्स बढ़ाओगे, बॉडी मूव कर जाएगी, फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा. तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है. That's the meaning of about to move. But about to move also means that body is still at rest. If there is no horizontal motion, body is at rest, तो इसका मतलब ये हुआ करता है horizontal forces are balanced. F cos theta should be equal to what? Fr. Should be equal to what? Fr. And this Fr we can see has reached its maximum value. F cos theta, Fr is at its maximum. What is the Fr maximum? Mu n, which is mu times mg minus f sine theta. We are interested in f, and therefore let's collect the terms of f. This becomes f cos theta plus mu sine theta, which is equal to mu mg. From this you get f as mu mg whole divided by cos theta plus mu sine theta. Cos theta plus mu sine theta. अब यहां पर ये हमारा फोर्स आ चुका है. But this force is not the minimum force. What is this force? This force is acting at this angle theta. When force F this much at this angle theta, this body is in this condition, about to move. Which means अगर मैं इस थीटा को चेंज कर दूं, if I
change this theta, then I will get different values of f. उसमें से कुछ ज्यादा होंगी, कुछ कम होंगी, कुछ एक वैल्यू ऐसी होगी जो क्या होगी, मिनिमम, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दैट मिनिमम वैल्यू. क्या हो रहा है ये, इस डिनोमिनेटर को जरा हम लोग देखते हैं यहां पर. इट्स मैथमेटिकल पार्ट, ये काम भी आएगा आपके, इस चीज को आपको याद भी रखना है. सपोज वी हैव अ फंक्शन लाइक दिस, y a sin theta plus b cos theta. We have been given something like this. तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, let's multiply root over a square plus b square and also at the same time divide with the same number. A upon root over a square plus b square sin theta plus b upon root over a square plus b square cos theta. This thing is same as this. Root cancel, root and root cancel. But what is this? क्या हमने करने की कोशिश की है? Look at this. Suppose we have a right angle triangle, and in this right angle triangle, base is A, perpendicular is B. Then you can see that hypotenuse is what? Root over A square plus B square. And now let's say this angle is phi. If this angle is phi, then what is A upon root over A square plus B square? A upon root over A square plus B square. B upon H. Base upon hypotenuse is what? Cos of phi. That means this part is basically root over A square plus B square multiplied by A upon root over A square plus B square. Cos phi, let's first take sin theta. Sin theta cos phi plus, what about this? B upon root over A square plus B square. B upon root over A square plus B square. Perpendicular upon hypotenuse is what? Sin of phi. Sin of phi means this is now cos theta and B upon root over A square plus B square, which is what? Sin of phi. क्या फायदा हुआ इस y को इस फॉर्मेट में अरेंज करने से, क्या फायदा हुआ, यहां देखना उसको. जैसे आपने y from this इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, व्हाट इज इट? sin A cos B plus cos A sin B, and you know what that is. हमारा जो y है, what is y? This whole thing is basically root over A square plus B square sin of theta plus phi. Sin A cos B plus cos A sin B is what? Sin of A plus B. That's the value of y, root over A square plus B square. What's the value of phi? Look here. What is tan of phi? Now when you will note down this whole thing, you will write down this mathematical treatment separately. ये चीज फिजिक्स में कई बार काम आएगी आपकी. A sin theta plus B cos theta, इस तरह के पार्ट को सिंगल साइन में कन्वर्ट करने का तरीका. Now what's the value of tan of phi? Tan of phi is coming what? B upon A. Tan of phi is what? B upon A. If somebody needs phi,
You know that this is what? Tan inverse B upon A. Tan inverse B upon A. क्या हमने यहां से यहां तक किया हुआ है? अब इसका यहां पर इंपॉर्टेंस देखना. Look at this. Mu sin theta plus cos theta. I hope you can see that. Mu acts like A. Coefficient of sin theta. Coefficient of sin theta is what? Mu. What is coefficient of cos theta? 1. Coefficient of cos theta is what? B. Which means I can now rearrange this force in this format. Mu mg root over a square plus b square. Root over a square plus b square. What is b? 1. Square is what? 1 multiplied by sine of theta plus phi. Sine of theta plus phi. क्यों किया हमने? क्या फायदा होगा इससे? पहुंचने वाले हैं उस जगह पर. What is f? Mu mg upon root over this number sine theta plus phi. Now look at this phi. ये जो phi दिख रहा है अपने को यहाँ पर, what's the value of phi? यहाँ से चेक करते हैं. What's the value of phi for our question? Value of phi is coming tan inverse b. Remember, b is the coefficient of cos. What is the coefficient of cos? Coefficient of cos is what? 1. This is tan inverse 1 divided by a. What is a? A is coefficient of sin theta, which is what? Mu. This is coming 1 upon mu. 1 upon mu. Now, that's the value of phi. आपके हाथ में नहीं है. Phi is a fixed number. Phi किस चीज पर डिपेंड करेगा? Mu. अपने को दिया हुआ है log and horizontal surface के बीच का coefficient of friction कितना है? Mu. There is no way you can change phi. What is that which you can change? Theta. Look again. You cannot change mu. You cannot change m. You cannot change g. You cannot change this number. You cannot change phi. The only thing you can change is what? Theta. What is that? आप फोर्स इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं. आपसे बोला गया है कहीं भी फोर्स लगाओ, but that force should be minimum and this body should be in this condition, about to move. तो हमने बोला फिर एक काम करते हैं. क्या काम करते हैं? अगर आप इस f को मिनिमाइज करना चाहते हो, minimize, you cannot touch this, you cannot touch this, you can only change what? Theta, which means you can change what? Sine. If you want to minimize f, जो हमारा sine part है, it should be maximum. It's in the denominator. If you want to minimize f, sine of theta plus phi should be what? Maximum. What I am saying is this: if f is minimum, then sine theta plus phi should be max. But then you know what's the maximum value of sine? Sine का maximum केवल क्या हो सकता है? 1. अगर sine का maximum 1 हो सकता है, then f minimum जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, what is that coming? Mu mg, this whole thing is what? 1. You're left with what? Root over 1 plus mu square. हमारा f minimum क्या निकल कर आया? हमारा f minimum निकल कर आया mu mg divided by root over 1 plus mu square. अगर आपसे बोला गया होता that you have to apply horizontal force only, that minimum horizontal force was what? Mu mg. Any force which can move is this,
you can see that this mu mg is being divided by a number which is greater than 1. 1 plus anything will be greater than 1. Its root will be again greater than 1. If you divide mu mg by a number which is greater than 1, तो आपका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो mu mg उससे भी क्या आएगा, कम आएगा. Which means हम इस mu mg से भी कम फोर्स लगाकर इस बॉडी को हॉरिजॉन्टली क्या कर सकते हैं, मूव. बट दैट फोर्स शुड बी दिस मच एंड इट शुड बी एट दिस एंगल थीटा. व्हाट इज थीटा? क्या हमने थीटा निकाल लिया? यहां पर चेक करते हैं कि निकाला है या नहीं. व्हाट इज दिस? साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इज मैक्स. व्हाट इज दैट? 1. लेकिन साइन किस वैल्यू के लिए 1 हुआ करता है? When theta plus phi is what? 90. When theta plus phi is what? 90. आप पूरा एक साथ नोट करेंगे. यहां पर मैंने इधर दिखा दिया है. When theta plus phi is what? 90. आपको क्या चाहिए? हमको चाहिए थीटा. What is theta भाई? Theta is 90 minus phi. Theta is what? 90 minus phi. Look here. This is what? Phi. If this is phi, what is this angle? 90. And what about this? This is 90, this is phi, and this angle is what? 90 minus phi. But what is 90 minus phi? Theta. आपको ये एंगल दिख रहा है थीटा. अगर ये एंगल थीटा दिख रहा है तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट थीटा. आपने बोला व्हाट इज tan थीटा? व्हाट इज tan थीटा? a upon b. a upon b. What is a? What is a? Coefficient of sine. What is coefficient of sine? Mu. Divided by what? Coefficient of cos, which is what? 1. 1. That means जो आपका थीटा आ रहा है, at theta is coming tan inverse mu. तो फाइनली क्या चीज बनकर आई? What is the minimum force? कहां लगाएंगे? किसी भी तरफ नहीं. This minimum force should act at this angle where this theta is tan inverse mu. I hope समझ में आया होगा किस तरह से हमने चीजों को यहां पर अरेंज किया हुआ है. Put down this much and then we'll see a second approach for finding F minimum. पूरी कहानी सेम रहेगी लेकिन F minimum के लिए हम इस फॉर्मेट की जगह पर एक दूसरा फॉर्मेट यूज करेंगे जो हमने कुछ दिनों पहले सीखा था, which is called maxima and minima. The time being, note down this whole part. ये mathematical part, this mathematical part, you can even write the whole thing as a separate note. You can make a separate note. You will be needing this part again and again in physics in 11th as well as in 12th. अगर y इस फॉर्मेट में है तो याद रखना y a sin theta plus b cos theta, it becomes what? This. क्या एडवांटेज है? अब इस y की वैल्यू को आप केवल साइन के साथ क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं. Note down this much. Let's see कि अगर जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड यूज किया उसकी जगह पर अगर हम मैक्सिमा मिनिमा को यूज करते तो क्या फायदा होता, कितना फायदा होता उसको देखना. You can see that this F is a function of theta. करने की जरूरत नहीं. म्यू एंड जी सारी की सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट. आप केवल क्या चेंज कर सकते हो? थीटा. इसलिए हमने बोला एफ इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ थीटा. इट्स लाइक दिस.
If you say that y is a function of x, if you say that y is a function of x, then we have seen in maxima and minima for y to be max or minimum, dy upon dx, it should be 0. ज्यादा डिटेलिंग के लिए यू कैन गो एंड सी दैट मैक्सिमा एंड मिनिमा लेक्चर. यहां पर just हल्का सा reference. If you have a function y which depends on x, then if you want to maximize y, then differentiate y with respect to x and put that equal to 0. y max है या मिनिमम है, जो भी होगा dy upon dx क्या होगा 0. हमारे केस में f as a function of theta is given, which means if we go for this df upon d theta, क्या टेक्निक है, जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, डिफरेंशिएट दैट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल. जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, हमें अपने फोर्स को क्या करना है, मिनिमाइज. जिस चीज को मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, डिफरेंशिएट दैट. ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद. If df upon d theta is what 0, then यहां से जो भी कंडीशन आपको मिलेगी, that condition will give you f minimum. Whatever things you get after you differentiate f with respect to theta and put that equal to 0, जो भी वहां से कहानी बनकर आएगी, that will help you in finding f minimum. अब हम यहां पर थोड़ा सा और अपनी मेहनत को बचा लेते हैं. ये भी किस फॉर्मेट में है, f equals to something upon this. इसमें से न्यूमरेटर कांस्टेंट है म्यू एम जी. अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते तो कई लोगों को इसको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आएगी, आनी नहीं चाहिए. म्यू एम जी दिस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इस पूरे पार्ट को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो टू द पावर -1. डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं, पावर फंक्शन पावर -1. बट रिमेंबर अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये इनको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर आई सेड कि अपन कुछ और करते हैं. क्या कुछ और करते हैं, यहां देखना. हमने बोला कि यार ये जो f है अपना, ये इस तरह का है, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय y. लेट्स से दिस डिनोमिनेटर इज y. अब आपको पता है जब हमारा फोर्स मिनिमम होगा तब हमारा डिनोमिनेटर y क्या होगा, मैक्सिमम. when f is minimum, we know that y should be max. इसको मिनिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना होगा, बिकॉज दिस न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट नंबर. f को मिनिमाइज करना था तो df अपॉन d थीटा 0 करो. y को मैक्सिमाइज करना है तो फिर dy अपॉन d थीटा ये निकालो और उसको क्या कर दो, 0. जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या कर देना है अपने को, 0. dy upon d theta. What is y? Y is this denominator, which is cos theta plus mu
sine theta. That's your y. This y is a function of theta और हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. बड़ा इजी है इस बार डिफरेंशिएशन. जो यहां पर शिफ्टिंग पावर एंड ऑल जरूरत नहीं है. यहां क्या करना है आपने dy upon d theta. What is differentiation of cos theta with respect to theta? Minus of sin theta plus mu. What is differentiation of sin theta with respect to theta? Cos theta. That's the differentiation of y with respect to theta. But for y to be maximum, dy upon d theta should be 0. dy upon d theta should be 0. I hope you can see last time जो अपने को थीटा निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी वो बहुत कम हो गई है. कितनी कम हो चुकी है? What is this? Minus mu cos. This is your sin theta equals to mu cos theta. What is this? Divide by cos theta, sin upon cos. You got tan theta equals to mu. एक बार में अपना क्या निकल कर आ गया? थीटा. What's value of theta coming? Tan inverse mu. लेकिन अपन थीटा के साथ साथ क्या और फाइंड करना चाहते हैं? F मिनिमम. कैसे पता करेंगे? dy upon d theta. जब मैंने आपसे बोला था कि when you differentiate, you will get something which will lead you to this value of F minimum. यहां पर वही चीज चल रही है. When you go for dy upon d theta equals to 0 like this, इसने आपको क्या बताया? इसने बोला कि dy upon d theta कब 0 होगा? उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए जिस पर tan थीटा कितना है? म्यू. हर एक थीटा के लिए नहीं, केवल किस थीटा के लिए जहां पर tan थीटा कितना है? म्यू. जिस थीटा पर tan थीटा म्यू है उस थीटा को जब आप यहां और यहां पुट करोगे जो आपको y मिलेगा that will be maximum. और अगर y मैक्सिमम है तो अपने को पता है कि f क्या है? मिनिमम. That means अपने को अब केवल क्या करना है? tan थीटा पता है, इससे क्या पता कर लो? cos एंड sin. जैसे cos एंड sin पता होगा, जैसे cos एंड sin पता होगा, अपने को क्या मिल जाएगा? f. And that f will be what? Minimum. तुमने क्या किया? This is theta, tan theta mu. tan से sin cos किस तरह से फाइंड करते हैं? Again, बड़ा इजी पार्ट होता है. tan and all से किस तरह से आप वैल्यूज फाइंड करते हैं? tan theta is mu. Let's write it as mu upon 1, perpendicular upon base. Construct right angle triangle like this. This is theta. This arm is mu. This arm is 1. This is 1 plus mu square. Only if you construct a right angle triangle like this, you will say that tan theta is what? Mu upon 1. Tan theta is what? Mu upon 1. Now in this triangle, if I ask you what's the value of sin theta, तो आप क्या बोलोगे? What is sin theta? Mu upon root over 1 plus mu square. What's the value of cos theta? What's the value of cos theta coming? Cos theta is coming 1 upon root over 1 plus mu square. क्या हुआ? हुआ ये y, which is this, ये चीज कब है मैक्सिमम? When tan theta is what? Mu. Or when sin theta is this. Or when cos theta is this. सबका मतलब सेम ही है. It's like this. सब चीज़ ने बोला कि y is minimum when tan theta is 1 by root 3. Suppose tan theta 1 by root 3. इसका मतलब थीटा कितना है? 30 डिग्री. तो sin 30 क्या आ रहा होगा? 1 by 2. cos 30 क्या आ रहा होगा? root 3 by 2. वैल्यूज क्या आ रही हैं? अलग अलग, लेकिन थीटा सबके लिए क्या बना हुआ है? सेम. Now let's go for f minimum. What is f minimum? F minimum is mu mg divided by cos. कौन सा cos? जब ये cos होगा तब आपका y max होगा और f minimum होगा. What's the value of cos? Cos is coming 1 upon root over
1 plus mu square plus mu times sin theta. Sin theta is a mu times sin theta, which is mu upon root over 1 plus mu square. What is this whole thing? Mu mg whole divided by, I hope you can see, this is 1 upon root over 1 plus mu square, which is like this, 1 plus mu square divided by root over 1 plus mu square, which is what? Mu mg. 1 plus mu square divided by root over 1 plus mu square will give you what? 1 plus mu square. That's the answer. फर्स्ट मेथड से जब आंसर आया था, आपको लग रहा होगा इतना सारा करना पड़ता है, इतना सारा नहीं कर रहे हैं आप, मुझे समझाने के लिए इतनी प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए सारे टर्म समझाने हैं, अदरवाइज आपने क्या करना था? डिफरेंशिएट cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, यहीं से कहानी खत्म होना शुरू हो जाती है। अब इस पूरी कहानी को कि व्हाट्स मीनिंग ऑफ दिस df अपॉन d थीटा 0 एंड ऑल, इसी मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू अपने दिमाग में फिट करते हैं कि क्या हमने इतना सब करके क्या चीज डेवलप की थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी एफ अपॉन डी थीटा 0, उसको देखना। सबको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके देखना जरा। सपोज किसी ने आपसे एफ और थीटा का ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला होता। एफ वर्सेस थीटा, एफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो आपसे बोला गया ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एंड थीटा। इस स्टेज पर इफ यू थिंक यू कैन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एफ एंड थीटा, वीडियो पॉज करना। वीडियो पॉज करने के बाद टेक योर टाइम, कोशिश करना कि आपसे एक ग्राफ प्लॉट हो सके, एटलीस्ट अटेम्प्ट करना। नहीं हो पाया कोई, लेकिन अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया और जिस तरह का आंसर मैंने प्रोड्यूस किया वही आंसर आया, दैट विल मेक यू हैप्पी। कुछ तो आपने किया इस क्वेश्चन के अंदर, एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस एफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। लुक हियर, cos theta mu sin theta. Theta means at this place theta is what? 0. Theta 0. That means what? Theta 0 means horizontal force. Then आपने theta increase किया and you made it like this. There is no point in saying that कि थीटा 90 से भी ज्यादा। 90 से ज्यादा का मतलब क्या होगा? If you increase थीटा further, इसका मतलब है एक तरह से आप बॉडी को इस तरफ खींच रहे हो, आप इधर खींच रहे हो, 90 प्लस वाला आदमी इधर खींच रहा है, बात एक ही है। उसके लिए बॉडी कहां मूव करेगी? इस डायरेक्शन में। तो हम केवल कहां से कहां तक थीटा में इंटरेस्टेड हैं? 0 and 90. 0 and 90. Let's say this is 90. Right here, theta is what? 90. I hope you can see standard theta 0, theta 90 पर जो expectations थी वही आ रही हैं। क्या आ रही हैं? theta 0. What is cos 0? 1. Sin theta, sin 0, 0. This part is 0, sin 0, 0. This part is 1. F is coming what? Mu mg. When theta is 0, आपको यहां पर क्या वैल्यू मिलेगी? mu mg। चूंकि अपना रिजल्ट था जब हमारा फोर्स हॉरिजॉन्टल था, थीटा 0 था, हॉरिजॉन्टल फोर्स में F मिनिमम के लिए इफ यू रिमेंबर क्या वैल्यू आई हुई थी? mu mg. Now when your theta is what? 90. When your theta is what? 90. Let's go for 90. Cos 90 0, sin 90 1. This is gone.
This is 1. Mu and mu cancelled. Mu and mu cancelled, and you got what? Mg. You got what? Mg. What is Mg? What is Mg? इस particular point पर when theta is 90, F is what? Mg. जो कि था क्या था? थीटा 90. थीटा 90 मींस आपका फोर्स इस तरफ लग रहा था. इधर लगने के लिए इस एंड को अगर मूव कराना था तो हमने क्या बोला था? वर्टिकल लिफ्ट ऑफ के लिए F कितना होना चाहिए था? मिनिमम mg. ये आया, विच मींस थीटा 0 और थीटा 90 के बीच में अगर आप अपने ग्राफ को प्लॉट करते तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आता. This is the graph between F and theta. Now, अगर ये F और थीटा के बीच का ग्राफ है तो आपसे बोला गया किस जगह पर F मिनिमम है. क्या यहां पर? नहीं. क्या यहां पर? नहीं. कहां पर? Right at this point. This is the place where F is what? Minimum. This is the place where F is what? Minimum. What is special about this point? What is special about this point? अगर आपने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, अभी पता होना चाहिए बॉस ग्राफ एंड ऑल के अंदर, अगर आपने यहां पर इस जगह पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया होता तो वो टेंजेंट इस तरह का आता. That's a tangent. That's a tangent. टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसको क्या बोलते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स. डी वर्टिकल एक्सिस अपॉन डी हॉरिजॉन्टल एक्सिस. डी वर्टिकल एक्सिस अपॉन डी हॉरिजॉन्टल एक्सिस. Theta. D vertical axis upon D horizontal axis theta. Theta. And at this position, your tangent is parallel to the horizontal axis. और अगर tangent axis के horizontal axis के parallel है तो उसका slope क्या हुआ करता है? 0. ये लिखा है. If df upon d theta is what? 0. F will be what? Minimum. Right at this place, this blue tangent is parallel to the horizontal axis and therefore its slope is coming what? 0. किस जगह पर? इस जगह पर. कौन सी जगह है ये? ये वो थीटा है जिसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है and then we called it what? This tan theta mu. What is this theta? This is your tan inverse mu. इस जगह पर थीटा कितना है? tan inverse mu. What is the force? Minimum. What is that minimum force? That's the minimum force. अब ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा स्कूल लेवल के ऊपर चला गया है क्वेश्चन, बट रिमेंबर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है. What is F, which is minimum if F is horizontal and you are trying to move the body, then for that your answer is what? Mu mg. What is F, which is vertical and you are about to lift the body? Mg. What is any force, but it should be the least force, and कंडीशन क्या है? बॉडी मूव कर जाए. इट शुड एक्ट एट दिस एंगल, शुड हैव दिस वैल्यू. केवल ये 3-4 रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. जैसे याद रखोगे, आई कैन से दैट नीट, जेई, इस तरह की एग्जामिनेशंस के लिए तो ये रिजल्ट टाइप की चीज आपके काम आ जाएगी, प्लस किसी और एग्जामिनेशन के लिए जितना आपने मैथमेटिकल अप्रोच सीखा है वो भी आपके काम आ जाएगा. Note down this.
Now look at this third method. हमने ट्रिगोनोमेट्री देख ली, हमने डिफरेंशिएशन देख लिया, तो वेक्टर्स भी देख लेते हैं। वेक्टर्स किस तरह से हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन में, देखना उसको। मास m, downward force is what, mg, normal reaction is n, f is acting at some angle theta, and friction is acting in this direction, and we know that friction has reached its maximum value because this m is about to move. And what's the maximum value of friction? Mu n. ये अपनी कहानी. These are the forces which are acting on this block. mg, normal reaction m, f, and fr, whose value is what? Mu n. Again, about to move, but still body is at rest. If body is at rest, then what does it mean? When you say body is at rest, it means this: F total, which is acting on the body, is 0. F total. Rest, body is in equilibrium. If body is in equilibrium, that means vector sum. Remember, vector sum of all these things is what? 0. क्या क्या चीजें हैं वेक्टर? हमने बोला f वेक्टर, f वेक्टर, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, वेक्टर सम शुड बी व्हाट? 0. f वेक्टर लिया, mg वेक्टर लिया, एक गल समझने के लिए mg वेक्टर, नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर लिया, नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर, म्यू n वेक्टर लिया हमने, म्यू n वेक्टर, vector sum should be what? 0. Then only this body will be at rest. अब I hope आपको पता है कि अगर किसी जगह पर सिचुएशन ये दी हुई हो, this is vector A, this is vector B, this is vector C, then I hope you remember that this thing is called what? A plus B plus C. Vector sum. First vector के हेड पर second vector की टेल, second vector के हेड पर third vector की टेल, first की टेल को last के हेड से ज्वाइन कर दो, that will give you what? Vector sum. How do you find vector sum? F, mg, n, mu n. हमने बोला कि इन चारों वेक्टर्स को ड्रॉ करो। अगर इन चारों वेक्टर्स को आप ड्रॉ करते, ऐसे एक रफ सिस्टम यहां ड्रॉ करते हैं, से समझ सके आप, एंड देन वी विल गो फॉर द रियल थिंग। बोला एफ, ये रहा एफ भैया आपका, दैट्स योर एफ। mg कहां लगा? डाउनवर्ड्स, ये रहा mg। नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रही है? अप, ये लगी आपकी नॉर्मल रिएक्शन अप, नॉर्मल रिएक्शन अप। म्यू एन कहां लग रहा है? इन दिस डायरेक्शन, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ म्यू एन। Now look at this diagram. This, let me draw this whole thing again so that you can see all these vectors clearly. You can see all these vectors clearly. F, that's your F. mg, ये लगा आपका mg। Normal reaction, ये रहा आपका normal reaction on the head of mg,
थोड़ा साइड में दिखा दे रहा हूं मैं जिससे कि चीजें समझ में आ सके. दैट्स योर नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. एंड देन व्हाट? नॉट नेसेसरली हियर, हमने बोला कि यार यहां पर कहीं है. ये है नॉर्मल रिएक्शन. Now what about last one, mu n? सोचना खुद कि mu n कहां होना चाहिए अगर आप सोचना चाहते हैं तो. पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि सर mu n को किस तरह से ड्रॉ करेंगे. f ड्रॉ कर दिया है सर ने, mg ड्रॉ कर दिया है, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर दिया है, बचा क्या है mu n. हाउ शुड आई ड्रॉ दिस mu n so that you get what? Zero force. अब suppose I draw mu n like this. That's your mu n. Then there is a problem. What is the problem? This is f, mg, and mu n. But vector concept says that sum of all these vectors should be what? Zero. If sum is zero, that means what? Vector sum is zero means what? आप जहां से चले थे लौट कर वहीं आ जाओ. अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की है, A, B, C, D. If head of vector D sits on the tail of vector A, that means A plus B plus C plus D will be what? Zero. कुछ रटने की जरूरत नहीं है. It's like displacement. First displacement, second displacement, third displacement, fourth displacement. What is total displacement? जहां से चले थे वहीं आ गए. Total displacement क्या है? Zero. अगर इन सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है, then this mu n, head of mu n should sit on the tail of f. That means हमारा डायग्राम इस स्टेज पर incomplete है. Now let's complete this diagram. How can I make this head of mu n sit on the tail of f? हमने कहा कि एक काम करते हैं कि इस f को यहां तक, mu n को यहां तक. Head of mu n, you can see now, sits on the tail of f. अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप बोल रहे हो कि जो आपका f total है that will be what? Zero. इस पार्ट को अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करना. ये चीज क्या बनी हुई है? mg नॉर्मल रिएक्शन, mu n f. ये mu n हेड, it has to sit on the tail of f. अगर किसी ने f को यहां से बोला होता तो काम नहीं चलता, because in that case you are left with this much empty space. अगर किसी ने f यहां तक किया होता तब भी वैलिड नहीं है. This thing should sit at this point. How can you make it possible? If you write like this. जैसे ही आपने ये चीज ड्रॉ की, वैसे ही आपके लिए f टोटल क्या हो गया? जीरो. अब इसी पैटर्न को हम लोग अपने इस क्वेश्चन के लिए यहां देखना किस तरह से ड्रॉ करेंगे. ऐसा कोई लॉजिक नहीं है that this should be first, this should be second, this should be third, this should be fourth. Can take any combination. और हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे. किस तरह से फायदा उठाएंगे देखना. Let's take first vector as mg. That's your mg. There is no way you can change length of mg. Fixed है, वो चेंज नहीं हो सकती. इस mg के हेड पर mu n को फिट करवाया. क्यों करवाया? मर्जी है हमारी. क्यों है मर्जी? अभी समझ में आएगा.
this is mu n. On the head of mg we have placed tail of mu n. वेक्टर्स उनका मतलब है एक के हेड पर दूसरे की टेल, ये चलना चाहिए. दिस इज mu n. On the head of mu n, let's place the tail of n. That's your n vector. That's your n vector. Now, what is this? Mg. What is this? Mu n. This is what n. आपका f, आपका जो f है वो क्या होगा? f ये होगा. This is f. So that ultimately it becomes a closed figure. जहां से चले थे वहीं आ जाओ. You can take any combination. हमने ये कॉम्बिनेशन क्यों पसंद किया अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर. mg, उसके हेड पर mu n, उसके हेड पर n, उसके हेड पर f. अल्टीमेटली जहां से चले थे वहीं आ गए. दैट मीन्स पक्की बात है कि f टोटल इज व्हाट 0. लेकिन हमने इस फिगर को, इस सेटअप को क्यों चूज किया उसको जरा देखना. Look at this angle. This is n, this is mu n. And it's not your wish that you can draw n to any extent, or you can draw mu n to any extent. n and mu n, they are dependent. किस तरह से dependent है अब वहां समझना, देखना भाई इधर. This is n, this is mu n. If I draw a line, if I draw a line like this, then let's say this angle is alpha. If this angle is alpha, what is tan of alpha? What is this line? This line starts from this point, the tail of mu n connects the head of n always, which means ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है. कैसे फिक्स हो चुकी है? What is tan alpha? What is tan alpha? Perpendicular upon base. What is this? 1 upon mu. आपको पता है कुछ कर लें हम, tan alpha चेंज नहीं होगा क्योंकि mu हमारा क्या बना हुआ है? कांस्टेंट. क्या मतलब है इस कांस्टेंट नंबर का? क्या मतलब है इस कांस्टेंट नंबर का? उसको यहां देखना. अगर किसी आदमी ने mu n यहां तक ड्रॉ किया होता, इफ योर mu n इज दिस, देन आपका n यहां पर फिनिश नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने यहां से यहां तक mu n बोला हुआ है और यहां से यहां तक n बोला हुआ है, दैट मीन्स जो हमारा अल्फा है, ये जो ट्रायंगल बना था इसका अल्फा क्या हो गया है? चेंज. नाउ व्हाट शुड आई डू सो दैट दिस अल्फा रिमेन्स व्हाट? सेम, एक ही चीज. एंड व्हाट इज दैट? दिस टिप should lie on this broken line. That's your n. अगर किसी आदमी ने mu n यहां तक ड्रॉ किया हुआ है, then n यहां तक ड्रॉ करना होगा. किसी आदमी ने mu n अगर यहां तक ड्रॉ किया हुआ है, then he has to draw normal reaction till this point. अब आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट. इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लेना. mu n एंड नॉर्मल रिएक्शन वो हमेशा इस तरह से बनेंगे that mu n and n, they always sit in this format so that your alpha remains what? Constant. अब suppose एक आदमी ने बोला कि भाई मेरा n यहां तक है. अगर n यहां तक है तो उसके लिए f ये होता. That's the f.
क्योंकि अल्टीमेटली इट शुड बी ए क्लोज डायग्राम। एक दूसरे आदमी ने बोला नहीं एन यहां तक है, अगर एन यहां तक है तो उसके लिए एफ ये होता भाई। किसी तीसरे आदमी ने बोला नहीं हमारे लिए एन यहां तक है, अगर एन यहां फिट होगा then this thing will act as what f. What I am saying is this, remember this angle is what alpha, right here this is what alpha. अगर किसी ने बोला होता that mu n is only this much, if mu n is this much then this should be n, tip of n should always lie on this broken line. If this is n तो फिर इस आदमी के लिए फोर्स ये होता। That's all then F1, F2, F3. That means F1, F2, F3, these are the forces which we are saying that can move this body or about to move. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये जो F है इसका क्या फाइंड करो मिनिमम। आपको इस तरह के F ड्रॉ करने हैं और उन F की जो लेंथ है, व्हाट इज द लेंथ, मैग्नीट्यूड, दैट शुड बी व्हाट लीस्ट, तभी आपका फोर्स क्या होगा मिनिमम। आई होप इन दिस ट्राइंगल, इन दिस डायग्राम इटसेल्फ यू कैन सी दैट ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट दिस। ज्यादा करेक्ट वर्जन बोलने का क्या होगा, ज्यादा करेक्ट वर्जन बोलने का क्या होगा, हमने बोला यहां पर, I'm not disturbing this diagram, you can draw this thing as it is. What is this? mg. What is this? mu n. What is this? Normal reaction. They should lie on this broken line. आपसे बोला गया n is somewhere on this broken line. आपको यहां से यहां ज्वाइन करना है एंड वंस यू ज्वाइन इट जो लाइन आनी चाहिए वो मिनिमम आनी चाहिए। तो आपसे बोला गया एक काम करो, ड्रॉ दिस लाइन, ड्रॉ दिस लाइन, ड्रॉ दिस लाइन, ड्रॉ दिस लाइन, ड्रॉ विच लाइन सो दैट इट्स लेंथ इज व्हाट मिनिमम। आपको पता है एक ही वो लाइन है जो आपको मिनिमम देगी। व्हाट इज दैट लाइन? What is that line? जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे अपने दिमाग में सोचते भी जाना इस चीज को। यहां से किस तरह की लाइन ड्रॉ करें जिसकी लेंथ मिनिमम हो एंड दैट लाइन शुड टच दिस ब्रोकन लाइन। हमने बोला एक ही तरीका है, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। Once you drop a perpendicular, this length is the least length. This length is your F minimum. लेकिन F it starts from what? Head of the n, and therefore हमारा n and mu n they should not be like this. They should be arranged in this form. That's your n. That's your mu n. This angle is what? Alpha. This is your F. अगर इसी फिगर की बात करते, this angle if is 90, then only this length will be what? Minimum. ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। अलग अलग जगह पर mu n n ड्रॉ करेंगे। Tip of n will lie on this broken line. Tip of n से यहां तक का connection is your F and you want it to be of minimum length. There is only one possibility, drop a perpendicular. Once you drop a perpendicular like this, आपको क्या क्या मिल गया देखना, आप क्या क्या मिल गया यहां पर देखना उस चीज को। कितना क्वेश्चन इजी हो गया है। What is this force? What is this force? Horizontal से एंगल कितना है इसका? थीटा। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है इसका?
Theta. What is this? Theta. What is this? 90 minus theta. What is this? If this is theta, this is 90 minus theta. I hope you can see that this angle is coming what? Theta. If this angle is theta, question is done. What is tan theta? What is tan theta? Tan theta. For this theta, this is the perpendicular, which is what? Mu n divided by base. This is base n. What is mu n upon n? Mu. ये अपना आंसर था. tan theta क्या आया था? Mu. होपफुली समझ में आया होगा वेक्टर से किस तरह से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं. एक बार थीटा मिल गया, कुछ खास नहीं है. थीटा पता है, mg पता है, this angle is 90. You can easily find what? This thing. कितना easy है, कितना easy है. Look at this triangle right here. ये जो triangle दिख रहा है इसको देखना. This and like this. यहां से यहां तक what is the length? mg. ये जो length है, what is this length? f. जो अपने को find करना है minimum. This is f minimum. This whole length is what? mg. And this angle is 90. This angle is what? 90. अगर ये 90 है, अब this angle is what? Theta. This is what? 90 minus theta. अगर ये 90 minus theta है, then what is this angle? This angle is theta. Theta. This is 90 minus theta. This is 90 minus theta. This is what? Theta. That's your theta. This is your theta. अगर ये theta है, ये mg है, I hope you can see that f minimum is the perpendicular part of this right angle triangle. This right angle triangle में what is sin theta? F minimum divided by mg. Sin theta is what? F minimum perpendicular divided by mg. Now sin theta अपने को पता है. What is sin theta? tan theta निकाल चुके हैं हम लोग. tan theta पता है, हमने थोड़ी देर पहले सीखा था. This is theta. This is mu. This is 1. This is root over 1 plus mu square. What is sin theta in this? Mu upon. What is sin theta? Mu upon root over 1 plus mu square. I hope you can see the answer. F minimum upon mg is this, and therefore F minimum is coming mu mg divided by root over 1 plus mu square. This is an approach where you can visualize what is happening. थोड़ा सा फर्स्ट टाइम देखने पर हो सकता है आपको झटका लगे, लेकिन एक बार और देखो, कुछ ही समझ में नहीं आया मुझसे पूछो. लेकिन अगर ये चीजें समझ में आने लगी, क्या क्या सर ने किस किस तरह से किया है, कंफ्यूज थे सर से पूछने के बाद, अल्टीमेटली अगर आप इन सारे पार्ट्स को समझने लगे तो आप केवल इस क्वेश्चन को नहीं, इफ यू लुक केयरफुली, हमने वेक्टर्स को सीख लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री सीख ली, हमने डिफरेंशिएशन देख लिया, हमने ग्राफिकल अप्रोच देख ली, सारी की सारी चीजें किसकी हेल्प से? एक सिंगल क्वेश्चन की हेल्प से. और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, then simply remember what? One thing. मिनिमम फोर्स क्या होता है? mu mg upon root over 1 plus mu square. किस एंगल पर? tan inverse mu. That's all. You just need to remember two things. If you're only into remembering all these results, तब भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. If you are looking for understanding what is happening inside, फिर अपन ने पूरा अच्छे से समझाया आपको. Or down this.